हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फ्रेंड्स मैं आपको लेकर आई हूँ सुनंदा रेस्टोरेंट, विच इज़ अ बर्मिस फूड रेस्टोरेंट एंड दिस इज़ लाइक प्योर एंड प्योर ऐसा खाना जो यहीं पर उगाते हैं, यहीं पर बनाते हैं। सो आई विल शो यू दिस इज़ अ लोगो ऑफ सुनंदा सी। और अब हम अंदर चलेंगे। और मेरा मन था खाओ सोए खाने का, तो मैं आज खाओ सोए खिलाऊंगी आपको और दिखाऊंगी। तो चले सुनंदा। Guys, I must tell you, this is one of the small but a very beautiful garden cafe. It's known as a garden cafe also, which is in Siloam area. I will share the address of this garden cafe. इस कैफ़े में ऑर्गेनिक फूड यूज़ होता है। जो ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये खुद उगाते हैं और उनकी सब्जियाँ बनाते हैं। सो वेरी हेल्दी फूड ऑल्सो दे सर्व इन अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन कैफ़े। You guys should come and seriously experience once this Sunanda. So let's go inside the indoor area where we can sit and have khao soy, because I told you मेरा khao soy खाने का मन था. So this is the indoor area of Sunanda. So here is my khao soy. Let's try it. It's a Burmese noodle soup, guys, and they make in a coconut milk with the spices and their own Burmese herbs. It's really yummy. While having our food, the Burmese food, we can also enjoy, the ambience, nature here, because it's a garden cafe, and the very beautiful outlooks are here. So this is a menu which I'm showing you now. So you can come and experience, and please comment me if you guys come here and experience, or if you already had came and already had experience the about this. This is the see how they make. सो गाइस, ये था हमारा सुनंदा रेस्टोरेंट, जहाँ पर बर्मिस फूड जस्ट इन 180 बाट में मिला हमें। द सूप वॉज जो मैंने ट्राई किया था इस खाओ सोए। सुनंदा रेस्टोरेंट की एक खासियत है फ्रेंड्स, कि ये जो रेस्टोरेंट है अपनी सब्जियाँ उगाता भी खुद है, खाना बनाता भी खुद है। वेरी यमी, वेरी डिलीशियस फूड दे मेक, and the Burmese food specially they make, right? And a very reasonable and comfortable price. So please, if you guys are following me, you should come once to Sunanda restaurant, which is in Siloam area. You can search easily in Google, you'll get the directions. And for next video, please do wait to share my
this my channel, do subscribe my channel, and do comment if you wanted to know anything about the Bangkok. Till then, bye bye, take care.